Up until now, let's go over the singular rules to get an understanding of whether we have what we want. The first step is do not be afraid of being seen. Second is take the lead. The third is set up your personality for romance and sexuality. The fourth is set up your personality for humor. Now you are kind of ready. Now we can begin taking this to a more interpersonal level. Rule number 5. Don't take yourself too seriously. Be playful. Now, जब बात आती है फ्लर्टिंग की, जब बात आती है अपना रोमांटिक सेक्सुअल इंटेंट कम्युनिकेट करने की, men in particular, because they instinctively understand some of this has got to do something with their worth. They start taking things too seriously. They cannot joke around about themselves at all. They cannot take things lightly. And what that communicates is not strength but fragility. उससे सिर्फ वीकनेस कम्युनिकेट होती है. उससे पता लगता है कि आप कितने ससेप्टेबल हो धक्का मारने पे टूट जाने के लिए. आप कितने कांच के बने हुए हो और कितने स्टील के बने हुए हो, वो डिपेंड करता है आप अपने पे कितने जोक्स ले सकते हो, आप कितने प्लेफुल हो. और इसका पर्पस समझो. जब आप खुद पे जोक्स ले सकते हो, जब आप खुद की गलतियों को और उन पे हंस सकते हो, तो सामने वाला भी तो अपनी गलतियों पे हंस सकता है. और सामने वाला गलतियां करता है ना, सभी गलती करते हैं ना, सभी इंसान है ना, सबसे गलतियां, सबकी इंबैरेसमेंट्स होती हैं. वो सामने वाला इंसान इस लेवल पे कंफर्टेबल हो जाता है अपनी इंबैरेसमेंट्स में. जब आप अपनी इंबैरेसमेंट्स और अपनी क्वर्क्स और अपनी छोटी बातों पे और अपने बड़े गोल्स को सीरियसली नहीं लेते, जब अपनी लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेते. और ये सेम इंटरव्यू से हम देखेंगे रसल के कुछ बेहतरीन ब्यूटीफुल टेक्निक्स ऑन हाउ ही टेक्स हिमसेल्फ less seriously. Come, let's watch. Perpetuate anything other than tonight. Just talking about runs, it's been 2-3 years since you've been here. The True World Tour is in our country. Please tell us, what can we expect? You come to it. I'll do jokes there. You will have a pleasant time. You will feel connected to your own humanity and to us as a species, but in a joyful way. You will feel optimistic about change. You will not feel hopeless. You will feel loved because I love you. Tickets are... ध्यान से देखना है उसने क्या किया है. उसको मौका देती है, वो कहती है तुम बताओ ना अपने शो के बारे में. भाई के पास पूरा मौका है फाड़ने का अपने बारे में. अरे मैं तो हीरो हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. कुछ नहीं बोलता, बहुत सिंपल सी बात बोलता है. सुनो, तुम आओगे, मैं जोक्स करूँगा, और उस जोक्स के प्रोसेस में तुम्हारा और हम सबका भला होगा. एक भी मोमेंट पे जब उसको ऑफर किया गया, उसने अपने आप को किंग नहीं बनाया, अपने आप को महा इंपॉर्टेंट हाइपर सेंसिटिव नहीं बनाया. ही वाज जस्ट लाइक तुम वहाँ आओगे, मैं जोक्स करूँगा, मेरा काम है जोक्स करना, तुम्हें पसंद आएगा, मेरे को पसंद आएगा. हम चेंज को लेके ऑप्टिमिस्टिक हो पाएंगे और तुम्हें प्यार महसूस होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. एज फार एज ये प्यार और चेंज वाला आइडिया, इसको हम रूल नंबर 6 में डिस्कस करेंगे. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हाउ ही डज नॉट टेक हिमसेल्फ सीरियसली. दैट इज व्हाट आई मीन. बी प्लेफुल. जोक अबाउट योर सेल्फ. इट्स ऑल राइट. वंस यू आर श्योर अबाउट योर सेल्फ, तभी तो तुम खुद के बारे में जोक कर सकते हो, वरना तुम जोक करने लायक ही नहीं हो ना अपने बारे में. और यहां से भी एक स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी कम्युनिकेट होती है व्हेन यू आर प्लेफुल. कैन यू टेक अ जोक ऑन योर सेल्फ? कैन यू क्रैक अ जोक ऑन योर सेल्फ? नाउ लेट्स लुक एट द अदर एग्जाम्पल. Now, curious that he's coming from somewhere deep. He's deep, that So player. have there been times in your life where you've lost that? You felt like you've lost it? Yes, I lose it every day. Do you get it back in time for when the show starts? Please God. देख रहे हो वो ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ लाइक आपको अपना आर्ट परफॉर्म करने के लिए एक डेप्थ से आना होता है. और वो बोलती है कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप खो देते हो, उसके पास फिर मोमेंट है सेल्फ अफर्मिंग होने का. नहीं मैं तो कभी नहीं खोता जी, मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. कहता हाँ मैं तो रोज़ ही खो जाता है मेरे से, मेरे को पता नहीं, रोज़ ही खो जाता है. फिर सामने वाला बोलता है उससे अरे तो फिर आपको ये शो में वापस मिल जाता है? वो कहता है अरे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मिल जाता है. लाइक he understands that he's got it. उसका वो मोजो अलाइव है, उसको वो एक्स फैक्टर के लिए he knows his thing. He knows he's sure of it. He's figured it out. He doesn't need to prove it to anybody. He can be playful about it. And that is how he communicates absolute comfort and strength of personality. The guy can take a joke. He can crack a joke on himself. Even if the joke's not about him, he can make it about him. A self-deprecating joke and still live with it. And this is rule number 5, which is that once you start communicating on an interpersonal level, दोस्त समझो इस बात को कि आप कितने playful हो, communicate strength of personality, और आप कितने ज़्यादा easily fragile और move around हो सकते हो और आप पे उंगली करी जाती है, communicates weakness of personality. That's rule number 5. Rule number 6 is have a purpose, and this you'll see almost in conjunction with most of the shit Russell has to say. For this sake, I might play a few clips again and you'll get a better hang of it. But you'll see whenever even Russell is talking about, not taking himself seriously, joke कर रहा है, playful हो रहा है, उसके साथ always एक purpose attached है. That he has a purpose beyond just masturbation, beyond just मैं कितना महान हूँ, मैं कितना महान हूँ, मैं कितना बेहतर हूँ, ये सब मेरे बारे में है. He has a purpose, and that purpose is extremely attractive. एक पर्पसलेस आदमी is automatically unattractive. You can test that hypothesis with almost any woman you know.
that if you have purpose and that purpose is backed with passion, there is nothing more attractive than that. And we'll see a few examples of how Russell has purpose. Or the beautiful part about Russell communicating his purpose is आप उसको 1:1 यूज़ कर सकते हो. Like इसमें कुछ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या पर्सनल करेज या इस सब के बारे में इतना कुछ लेना देना नहीं है. आपको देखना है, अपने अंदर झांकना है, पूछना है मेरा क्या पर्पस है लाइफ में, और वो पर्पस कम्युनिकेट होना चाहिए. चाहे आप उसको बोल के कम्युनिकेट करो, चाहे वो आपके सोशल मीडिया एक्टिविटी से कम्युनिकेटेड हो, चाहे वो जिंदगी में आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो उसमें अनसेड तरीके से कम्युनिकेटेड हो. कम, लेट्स वॉच. वील वॉच दिस क्लिप अगेन. Perpetuate anything other than tonight. Just talking about runs. It's been 2-3 years since you've been here. The True World Tour is in our country. Please tell us, what can we expect? You come to it. I'll do jokes there. Does not take himself seriously. Now see. Feel connected to your own humanity and to us as a species, but in a joyful way. You will feel optimistic about change. You will not feel hopeless. You will feel loved because I love you. Tickets available. See the point? तो उसने ख़त्म भी टिकट्स अवेलेबल ऑन अ ह्यूमरस नोट किया, प्लेफुल नोट किया, शुरू भी प्लेफुल नोट में किया, बीच में उसने बता दिया उसका पर्पस क्या है. मैं चाहता हूँ तुम महसूस करो वो प्यार जो हम कॉमन एज ह्यूमंस शेयर करते हैं. तुम वो शेयर करो, हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी, दैट ऑप्टिमिज्म फॉर चेंज, दिस एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड विद लाइफ विदाउट लूजिंग होप. That's his purpose. It's such a dense purpose and people love that. Watch people's reactions. उसके जोक के बाद भी It's a hell of a promise. that's one hell of a promise. You see, they recognize how deep his purpose is. At least in the context of this conversation. सारी morality right wrong बाहर छोड़ दो. They understand how deep his purpose is. Let's look at another example. Within them that doesn't need to be consumed or bought because we already own it. That needed a beat behind Yeah, it. That was didn't amazing. Someone can do that later on YouTube. Well, now you've opened a cafe, which sounds awesome, where you've got recovering drug addicts working there. They're unreliable. Why are you late to work? Drugs. Oh. See, he just मैंने वो से कह रही है तुमने इतना महान काम किया है, रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट्स को लेके कैफे एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट बनाई है, फिर उसके पास मौका है खुद को अग्रैंडाइज करने का, बट वो क्या कहता है, प्लेफुल. नहीं वो अनरिलायबल है. No, it's going really well, as a matter of fact. It's a social enterprise. It's good to have businesses that are not motivated entirely by profit, but to bring people together as communities, you know? Now, I'm a recovering drug addict myself, so the opportunity to get recovering drug addicts working for me is a great benefit, and it makes me feel very, very... Did you watch her face? Did you see how serious she was about it? ...connected. But I will say they're unreliable! Back to playful. They're doing really bloody well. It's good. Back to serious. It's good to go to a business place and you know people have suffered and they'll continue to suffer. Back to playful. I stay out of that cafe because I start to take it too serious, you know, like, I want to be in control of it and go, oh my God, come on, let's go. Like I go into being Basil 40 from 40 Towers. Well, you're extremely... Notice how he packaged something as intense as his purpose without making it मैं कितना महान हूँ. ही पैकेज्ड इट इन ह्यूमर, ही पैकेज्ड इट इन प्लेफुलनेस. सो इसके पर्पस का एसेंस, सब्सटेंस भी कम्युनिकेट हो गया सामने वाले को. उन्होंने ध्यान भी दिया. इसके बाद दिस वुमन गोज ऑन टू गिव हिम अ कॉम्प्लीमेंट एज वेल, वाइल ही डिड नॉट मेक इट अबाउट हिज ग्रेटनेस एट ऑल. This is how rule number 5 and 6 kind of interact with each other. You have to be playful so that others understand you don't take yourself too seriously. The world's not about you. You're not narcissistic in that way. And at the same time, you have to find a way to package your purpose so other people know about it. This is just basic personality stuff. Look, this purpose wala idea is not necessarily the most important thing when you're trying to flirt for the first time, which is most likely what you'll do after you watch this video. This purpose wala idea is a lot better over a longer period of time. पहली बार वो तुम्हारी लाइफ का पर्पस जान के कोई करेगा भी क्या, या तुम्हारे एक्शंस का पर्पस जान के कोई करेगा भी क्या. अभी तो तुम मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, इधर उधर जोक्स क्रैक कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में जान रहे हो, एटसेट्रा. राइट? ये एक लेवल डीपर इन्फॉर्मेशन है. बट व्हाट दैट मीन्स इज फॉर योर पर्सनैलिटी टू अपीयर कंप्लीटली टू समबडी एल्स इन एन इंटरेक्शन, योर पर्पस, योर मोटिवेटिंग फोर्स, योर ड्राइव नीड्स टू अपीयर, एंड इट डज नॉट नीड टू अपीयर इन अ वे जहाँ पे तुम खुद की ही तारीफ कर रहे हो, वेर यू आर बिकमिंग मास्टरबेटरी. It does not have to be in that way. For it to work like that, one of the best ways is to package it around playfulness. For you to package it around playfulness and people still take you seriously enough, you have to establish that part of your personality is humorous. And one of the best compliments of a humorous personality is a personality that is also romantic and sexual, because that humor is then charged with a certain valence, with a certain flavor. Right? And for you to establish your personality, one, you need to be seen, and two, you need to take the lead. तभी तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे और देखेंगे तुम कहाँ ले जाते हो बातों को. रसल ब्रांड को बात छोड़ दो, वो ले जाता ही सीधा सेक्स पे, वो ले जाता ही सीधा सेक्सुअलिटी पे.
That is the way in which the first 6 rules kind of flow, right? Now let's talk about rule 7. Rule 7 is commit to your reality. अभी तक अगर तुम ध्यान से देखोगे 6 रूल हैं तो मोटे, बट अगर उनकी एसेंस नोट करने की कोशिश करोगे उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है. मैंने बहुत फंडामेंटली बहुत बारीक तरीके से ब्रेक डाउन कर रखा है ताकि तुम सारे कंपोनेंट समझ सको. कुछ भारी कुछ नहीं है. और ये जो 7th रूल है ना, ये एक तरीके से प्रेशर कुकर का ढक्कन है. यहाँ से हम पूरा जो स्ट्रक्चर अभी तक इस्टेब्लिश किया उसको टाइटन कर लेंगे. इशू क्या आता है दोस्त? इशू ये आता है कि प्रखर भाई ठीक है, मैंने सारी बात आपसे सुन ली, मैंने सारी बात आपसे समझ ली, मेरे को आइडिया लग गया आप क्या कह रहे हो, बट इसको करने में अगर मैं नहीं डिलीवर कर पाया तो क्या? वो सीक्रेट केमिकल एक्स जो मिसिंग है ना तुम्हारी डिलीवरी में, उसे कहते हैं कमिटमेंट टू रियलिटी. अगेन, इन द इंटरेस्ट ऑफ अ प्लग, आई हैव टू से दिस, देयर इज अ लॉट मोर दैट वी टॉक about committing to your reality within Art of Conversation. If you want to learn more, you can check that out there. Now, back to the issue. This commitment to reality is how convinced you are of your actions. तुम मानो चाहे मत मानो, आदमी को पता भी नहीं होता जब वो तुम्हें देख रहा होता है, पर वो तुम्हारे अंदर डाउट सेंस कर सकता है. और जहां पे आदमी को डाउट तुम्हारे अंदर सेंस करने को मिल गया ना, वो तुम्हारे एक्शंस एनालाइज करेगा. जब वो तुम्हारे एक्शंस एनालाइज करेगा, वो रियलाइज करेगा अरे यहाँ पे ये गड़बड़ है, इसको पॉइंट किया जा सकता है. और वहाँ से जो गंगा है ना, वो तुम्हारी डायरेक्शन में नहीं बहेगी, वहाँ से वो फिर कहीं और चली जाएगी. तुम्हें पुश बैक आएगा, लोग तुम्हें बातें बोलेंगे, तुम्हारे फ्लर्ट जो थोड़े रिस्की हैं वो लैंड नहीं करेंगे, तुम्हारे जोक्स जो थोड़े आउट देयर हैं वो लैंड नहीं करेंगे. और to make all of this work, to make your personality kind of romantic sexual, to make your humorous personality show up, to have your playfulness and your seriousness and all these things in order, you have to commit to your reality. You have to commit to what you say. You have to be sure of the fact that what you're doing is all right. And here is the problem. In the initial phases of you trying and testing this stuff out, it'll be whatever. You won't be able to commit to it. And you'll see pushback immediately आ जाएगा. तुम कुछ बोलोगे, लोग रियलाइज करेंगे इसने ये जोक लैंड करके हमारी तरफ देख रहे हैं ताकि हम हंसेगी नहीं. लोग बोलेंगे क्या बकवास जोक था, मुंह बंद करके बैठ. एंड यू बी लाइक ओह. एंड अगर आपको उसे बेहतर करना है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए सिर्फ आपको जोक चेंज करना है. ज़रूरी नहीं है आपका जोक बर्बाद था, हो सकता है आपकी डिलीवरी बर्बाद थी, हो सकता है आपका कमिटमेंट बिहाइंड द कन्विक्शन बिहाइंड वॉट यू सेड was useless. And if you ever want to observe this phenomena firsthand, go watch an open mic. You'll see that जो पहली बार open mic करने आया ना, उनका ना अपने जोक्स के प्रति कमिटमेंट नहीं होता, तो ऑडियंस इस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होती उनके साथ. ऑन दी अदर हैंड, जब एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जिसको ओपन माइक में बुलाया जाता है टू होस्ट और वट एवर, उसके जोक्स में देखना वो फेंकता लाइन ऐसे जैसे वो विश्वास रखता है उस इंसल्ट में या उस जोक में, कि वो उसकी अपने घर की इंसल्ट या जोक है, वो 100 बार प्रैक्टिस कर चुका है ऐसा लगता है, चाहे उसने किया ना हो. और ऑडियंस उस चीज़ के साथ दे गेट अलॉन्ग इट फास्टर. एंड हियर इज द थिंग, इफ यू वांट टू नोटिस दैट, बाय द वे, यू डोंट हैव टू गो टू फार, जस्ट वॉच एनी ऑफ माय वीडियोस. व्हेन आई टॉक, I at least, to whoever likes me, appear so convinced of what I'm saying. Sometimes you don't even stop to check and see if what I'm saying is right and wrong. That is what commitment to your reality does. People instantly mirror it on their end and they're like, हाँ, ये बात तो ठीक है. Now, we'll watch a few examples of Russell trying to do that. And then we'll talk about that. I'll shuffle them for you. Shuffle. Yeah. Shuffle. Look. Give us that. That's good. Pen. You need a pen. Okay, coming up later. Thank you very much, Absolutely Kat. need a pen. Okay, we're going to be talking about the situation with Edward Snowden. This whistleblower, is it good what he's done for America, or are our secrets being jeopardised by his intentions? We're going to be talking about that. Also, Bradley Manning. Is Bradley Manning an American hero, or is he compromising the safety of American troops? We care about your views here on Morning Joe. We'll be talking about those later. Here with me are Brian and Kat. Brian, nice tie. What do you think about Edward Snowden? What do you think about the situation with Snowden? Have you got anything to hide? Should we be concerned about the revelations that are occurring? I don't know what's wrong with you. I understand everything he said. Look, Edward Snowden around this time was a controversial subject. Nobody was touching it, right? The backdrop of this interview is that he's been kind of made uncomfortable by his hosts at this point. They've said stuff that he's not liked, and we'll get to that too. The guy takes complete lead of the situation, grabs his thing. Initially, he's a little hesitant. He's like, because he's thinking of what to say, and then suddenly gets in flow, and he commits to it. He's like, we're going to talk about Edward Snowden, and la 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 la, and also Bradley Manning, and la 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 la. And you see these two guests kind of laugh, because अब उसने इस लेवल पे लीड लेके इन लोगों को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. इस लेवल पे कमिटमेंट मार चुका है कि वो उन्हीं के शो पे उन्हीं को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और वो लोग इसके साथ प्ले अलॉन्ग कर रहे हैं. दे आर गेटिंग अलॉन्ग द जोक कि हाँ, हम ही अपने शो पे गेस्ट हैं और ये हमारा एंकर है. That is what I mean by commitment to reality. When you talk something, throw weight behind it, like you believe it. Like that is what you're really doing. And once you start committing to your reality, it's not just with what you say, it's how you see the world overall.
If you commit to that, that does not mean you be inflexible. You listen to the other person. But what you say in that moment, you should be sure of. The problem happens when you say something and you're looking for others to validate it. कि हाँ ये funny था ना, देखो मैंने कितना funny किया. As soon as you start doing that, people notice. And then this same validation seeking becomes doubt. ये funny था कि नहीं था, ये funny था कि नहीं था. And people see that. And फिर वो तुम्हें tear apart कर देते हैं. So when you're trying to communicate, when you're trying to show intent, when you're trying to flirt, when you're trying to give a compliment, when you're trying to even like tease a little bit, जो भी, commit to your bloody reality. When you're trying to express that your personality is humorous, when you're trying to express your personality is romantic, sexual, commit to your reality. When you're trying to take the lead, when you're trying to be playful or talk about your goals and purposes and missions and whatever, commit to your reality. This is not just a tip for flirting, this is a tip for life, this is a tip for social interaction around the world. When you talk, be flexible, but be clear. Commit to your reality. I have one more clip to show you from Russell Brand, which is an extremely provocative clip. He talks about stuff, well, I don't know how he does it, but it's an extremely provocative clip that would never fly on a TV channel news show particularly, but he makes it fly. Look at this, watch this. Now, Aussie politics, in the past you've had quite a bit to say about Abbott, Joe Hockey. In the last month we have ourselves a new Prime Minister, Malcolm Turnbull. Do you have an opinion on him yet? Here is that opinion now. Again, look, he's going to say a serious opinion. He's packaged it in playfulness. Here is that opinion now. Perform कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब देखना opinion देगा. What you put really, really rich people in charge of your country for who want to build a thing called a tax shield? Understand, he's talking about politicians. He's talking about some of the most sensitive egos in the country on a news show in front of thousands and millions of people. Watch how he commits to what he says. Want a tax shield. Also, what's that thing he goes like, he's got money in the Cayman Islands, but there's nothing wrong with it. Having your money in the Cayman Islands is like putting your dick into custard. We all want to do it, but there's no rational reason to do it. They are all, इसका शक्ल देखो इस लड़के की. They are all kind of embarrassed. उसके अपने मुंह पे हाथ है. उसको पता है कि कितनी embarrassing बात कह दी गई है. वो लोग, बाकी लोग भी जो हंस रहे हैं ना, वो अपना मुंह दबा के हंस रहे हैं क्योंकि वो हंसना चाहते हैं, बट इस पे अगर वो हंसते हुए दिख गए तो गड़बड़ हो जाएगी. लेकिन बंदे का कमिटमेंट देखो. ये सिर्फ एक सिंपल लाइन ऑलमोस्ट हर चीज जो अभी तक हमने डिस्कस करी है ना, उसको इलस्ट्रेट कर देता है. He appears, he takes the lead, he establishes his personality as sexual, putting your dick in the custard, sexual thing to say. He then establishes himself as funny because he bloody makes this super funny. Right? There is playfulness. When he's asked about his opinion, he's like, here is my opinion. He's already being playful and he has a serious opinion. And then he communicates all of that with a छक्का मारने वाला shot होता है ना, जब तुम commit करते हो, helicopter shot, full commitment के साथ बोलता है. And then everybody erupts laughing. Everybody knows what's up. That is what I'm talking about. Because like we'll discuss in the following 5 rules, आपको intent दिखाना होगा, आपको compliment देने होंगे, आपको pushback करना होगा, आपको कोई सामने से pushback करे वो handle करना होगा, और इन सब चीज़ों के लिए to be committed to your reality is very important. Because जहाँ पे बात confrontational हो जाती है ना, जहाँ पे बात थोड़ी सी conversation weird हो जाती है, लोग तुम्हें फाड़ने के लिए तैयार हैं. ज़रूरी नहीं है, अगर तुमने अपने आप को humorous establish कर रखा होगा, लोग तुम्हें नहीं फाड़ेंगे, लोग तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगे. But you have to appear like you're sure of yourself. That's very, very important in social circumstance. भाई ऐसा है, अगर तुम अभी तक वीडियो में बैठ गए हो ना, if you still sat down to the video up until rule number 8, it's very clear that you really want to learn this. And I appreciate that. I respect that. It takes a certain amount of humility to be like, मैं ये सीखना चाहता हूँ और मैं ये सीखूंगा, even though ये सीखने की वजह से दुनिया मेरे को ये बोलेगी, दुनिया मेरे को वो बोलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ज़बरदस्त बात है. डरना मत, घबराना मत, इन चीज़ों को ध्यान से समझना, इन चीज़ों को ध्यान से अप्लाई करना, कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचोगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा. Like I've always insisted, tips around communication, rules around communication are to be applied and then learned. You cannot understand it intellectually. This is an instinctual skill. And in the interest of that, with that having been said, rule number 8 is show intent. Sometimes even publicly. And we'll see 2 great examples of this from Russell Brand. But let me first make you understand the rule. We've kind of spoken about it when it comes to setting up a sexual romantic personality. But this is more direct as a rule. आप अपनी interpersonal communication में ये बात आपको बोलनी बहुत ज़रूरी रहेगी दोस्त, कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ. अगर आप ये बात नहीं बोलोगे ना दोस्त, कहीं नहीं पहुँचोगे आप. ठीक है, इंसान को ये भी पता है कि इसकी पर्सनालिटी जो है वो रोमांटिकली चार्ज्ड है, सेक्सुअली चार्ज्ड है, सब बड़ी बात है, ह्यूमरस है, ये वो कमिट करता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंसान है. यहाँ तक आपने अट्रैक्शन इस्टेब्लिश भी कर दी अपने पर्सनहुड में, तो भी आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हो, ये बात तो आपको बतानी पड़ेगी ना. यहाँ पे हम टेक्निक लेवल पे आ गए हैं.
अभी तक हम पर्सनैलिटी लेवल पे बात कर रहे थे, यहाँ पे हम फुल टेक्निक लेवल पे आ गए. आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, भाई और बहन और दोस्त, दोस्तनी, मित्र, मित्रनी, जो भी, कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो. यू हैव टू कम्युनिकेट इंटेंट एंड समटाइम्स यू हैव टू काइंड ऑफ डू इट पब्लिकली. एंड दिस इज अ लेसन दैट टुक मी फॉरएवर टू लर्न. फॉर व्हाटएवर वांटेड रीजन, ग्रोइंग अप आई वाज नॉट इमोशनली एन एक्सप्रेसिव किड. मेरे को आता नहीं था. मेरे को बहुत मुश्किल से सीखना पड़ा है अपने इमोशंस को, अपने एक्चुअल सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस कर पाना. पब्लिकली तो पूछो ही मत. स्ट्रेट एम्बैरेसमेंट, ये मेरी चाइल्डहुड कंडीशनिंग है. किसी के लिए स्ट्रेट फियर भी हो सकता है, किसी के लिए स्ट्रेट शेम भी हो सकती है, किसी के लिए स्ट्रेट रिजेक्शन की मेमोरीज भी हो सकती हैं. अंडरस्टैंडेबल. बट इफ यू वांट समबडी, you've got to let them know you're interested. That is your intent with them. Your intent with them is, मैं आपके साथ चंद पल प्राइवेटली प्यार, ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो आई लव यू वाला प्यार, बट प्यार एक्सचेंज करते हुए, ह्यूमन टू ह्यूमन एक्सचेंज करते हुए बिताना चाहता हूँ. मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीते हुए मुस्कुराना चाहता हूँ. लाइक समथिंग एज सिंपल एज दैट. इतना चीज़ी नहीं, बट समथिंग एज सिंपल एज दैट डज द जॉब. एंड द प्रॉब्लम इज समटाइम्स यू फाइंड योर सेल्फ इन सिचुएशंस वेयर आपका इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन इज सोशली बिकमिंग एविडेंट, या आपके पास और कोई मौका नहीं है, आपको अभी ही ये करना पड़ेगा, इसके बाद आप इनसे मिलोगे नहीं. उस मोमेंट में आपको कभी कभी पब्लिकली भी अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस, आप 5, 7, 8 लोग बैठे हुए हो सपोज कहीं पे हो, सेइंग समथिंग एज सिंपल एज, एक हाइपोथेटिकल नाम ले रहा हूँ, ठीक है, प्रणीति. अगर कोई प्रणीति नाम की लड़की इस वीडियो को देख रही है, आप नीचे आई लव यू लिख सकते हैं, मैं आपको आई लव यू लिख दूंगा. सपोज प्रणीति, राइट. यू हैव टू से समथिंग एज सिंपल एज, हाँ प्रणीति तू तो बड़ी क्यूट है ना. ऑफ कोर्स दिस इज विदाउट कॉन्टेक्स्ट, तो इतना फनी नहीं लगेगा, बट हाँ प्रणीति तू तो बहुत क्यूट है ना. शी गोज ऑन टू शो दैट आई फाइंड हर क्यूट. एंड व्हेन आई से यू आर क्यूट, एटलीस्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट्स क्लियर दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉर, हाँ हम कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं तेरी सारी मदद करूंगा. नहीं, इट मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन हर. So as simple as that. Sometimes you got to do it publicly. If not, the best place to do it privately. क्योंकि जब तुम publicly करोगे ना, एक लेवल पे उसको भी embarrassment होगी. Especially इंडियन कंजर्वेटिव कॉन्टेक्स्ट में. उसको, वो भी नहीं चाहती कि उसके आसपास वाले लोग उसको देख के बोले हाँ तू तो बड़ी फ्लर्टी हो रही थी. वो भी नहीं चाहती ये बात. बट कभी कभी आपको ये ओनरशिप, ये लीड लेनी पड़ेगी सोशल सर्कमस्टेंस में, वेर यू जस्ट गो अप एंड बी लाइक, या यू आर प्रीटी क्यूट, वेर यू आर जस्ट सिटिंग अराउंड योर फ्रेंड्स और व्हाटएवर, यू आर इन दैट कॉलेज ग्रुप और व्हाटएवर, यू आर लाइक, यो यू लुक ब्यूटीफुल टुडे. A compliment bhi is a style of showing intent. There is many ways in which intent gets communicated. You have to find a way to communicate your intent. And we look at examples of Russell doing it again in his extremely courageous and culturally symmetrical way, जहाँ पे वो है contextual तरीके से कर रहा है. But notice how he does it publicly and उसको 1% of embarrassment या self-consciousness भी नहीं है. Come, let's watch. Open arms, and it was amazing, and then we kind of exchanged numbers, and here I was hanging out with I didn't meet Jim Harbaugh the first Russell, day. Yes. you thinking about Just by the way, up until now you have to understand, Russell's been sitting on Jimmy Fallon for a while, and then this beautiful woman Catherine McPhee comes a little later. The whole interview is hilarious. This clip is hilarious. Description में कहीं ये clip होगी. But this is one of the most watched TV shows in the entire world, particularly around the time that this was being aired. Now notice. Yeah, as a matter of fact, I was thinking about something, because as you know, I've announced it, I find Catherine very attractive. Then when she said exchanged numbers, I thought things that I'd like to exchange with her. Numbers! numbers? He's a fan of numbers. He likes numbers. He's not a numbers fan. And genes! He's number. All right, no, you can't. Genetic info, data. What is happening right now? You see what he did? कितना स्लो लेवल पे उसने अपना इंटेंट बिल्ड किया. मैं बता ही चुका हूँ इसको कि ये बहुत अट्रैक्टिव है. इसने थोड़ा सा ही मेंशन किया है शुरू में, वो पार्ट भी हम देखेंगे. एंड ही इज लाइक, एंड व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट एक्सचेंजिंग नंबर्स, आई थॉट व्हाट आई वांट टू एक्सचेंज विद हर. इसने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, इंटेंट कम्युनिकेट कर दिया. व्हाट आई वांट टू एक्सचेंज विद हर, नंबर्स. And then once he recognizes him saying numbers, everybody is kind of settled. He's like, no, genes, genetic data. Now he's explicitly talking about sex. And she's just like, yo, what the hell is even happening? Because वो publicly embarrassed है. इतने सारे लोग realize कर रहे हैं कि ये situation हो रही है. She doesn't even know how to handle. She's not even looking at him. She's not even looking at him. She's just like, whoa, what is even happening? She's not feeling bad about it as far as I can tell from this interview. But she's kind of like self-conscious हो रही है वो. And this is what I mean by the entire phenomenon of expressing yourself, sometimes even publicly. Iske paas, as you'll see if you watch this clip, he did not have another opportunity with her. He later finds out she's married, whatever. But he made the most of it. He made sure she knew what he thought about her. कल को अगर भाई इनको DM करते हैं या कहीं और मिलते हैं, they can take the conversation from there. The premise is set for this conversation. They're not going to be lifelong friends or strangers. They're either going to do it or go forward or not. It's so clear, right? Let's look at another example. And this example is again from the putting your dick in a custard wala interview. It's one of the more fantastic clips from him. And
Russell's been sort of flirting with this woman. Russell's been sort of flirting with this one particular woman from the very get. He's just been throwing compliments at her. And this is the point where he very loudly establishes his intent. Look at this. You're extremely reliable, and you're reliable enough that you're going to stay with us for a whole nother segment and be just as funny as you were then. I will so not we're going to take a leave break. till Fifi and I have a 25-year-old child. Okay. Stay with us until that happens. तुम देख रहे हो इंटेंट कितना सीरियस है दैट आई वांट टू हैव सेक्स विद दिस वुमन बट वो इंटेंट कम्युनिकेट करने के लिए भी उससे कितना प्लेफुली आई विल नॉट लीव टिल फीफी एंड आई हैव अ 25-year-old child. Everybody in the room knows what's up. You sitting in India with your personal courage do not necessarily have to be that explicit and that public. Sometimes you have no other opportunity than to be a little public. But what you need to definitely do is let the other person know this is your intent. And their feedback will tell you whether you can pursue that interest, that intent or not. अगर तुम बताओगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको पता नहीं चलेगा वो तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल हैं, कितनी स्पेशल नहीं है. और मैं स्पेशल बॉलीवुड तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा नहीं, कि मैं तुम्हें अलग तरीके से देखता हूँ. आई सी यू एज दिस पर्सन हु कैन बी माई पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर इंटीमेट एक्ट, वेदर दैट बी लव, वेदर दैट बी वट एवर, वेदर दैट बी अ स्मॉल रिलेशनशिप. कि मैं तुम्हें एक अलग दर्जे पे देखता हूँ. वो दर्जा रानी का दर्जा नहीं है, वो दर्जा मेरी पूरी दुनिया का दर्जा नहीं है जैसा तुम बनाना चाहते हो. वो दर्जा स्लाइटली अलग है और उस लेवल में तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ. ये बात कम्युनिकेट कर देना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना तुम कहीं नहीं पहुंचोगे आगे. दैट इज एज फार एज रूल नंबर 8 इज कंसर्न. यू हैव टू एक्सप्रेस योर इंटेंट एंड यू हैव टू बी, समटाइम्स यू माइट हैव टू डू इट काइंड ऑफ पब्लिकली टू. ब्रो, मैं ये प्रॉब्लम समझता हूँ कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद पीपल. मैं ये समझता हूँ कि आई एम गोइंग ऑन अ डेट एंड आई डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू दैट अदर पर्सन. आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और अ नेटवर्किंग इवेंट और मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ. और एग्जैक्टली इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए आई हैव क्रिएटेड समथिंग एक्सक्लूसिवली फॉर यू. गो चेक आउट द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन. टेल मी व्हाट यू थिंक ऑनेस्टली.